many questions. That means particle motion. That I want to discuss, and let us do it one by one. So these questions are not very tough, but थोड़ा सा careful रहने की जरूरत है. So the first question is like this. Everybody will read also, and then I will solve it also. और लास्ट आते आते भी आप ये मत सोचो कि क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी, I mean जो भी करना है वो उस जल्दी में भी थोड़ा पेशेंस के साथ ही करना है, वही फायदेमंद होता है. If you are too quick to revise, so that becomes useless also. So वो आपको थोड़ा ध्यान देना है. Okay, so you all got it? Yes. So in an experiment to measure the charge to mass ratio, so you know, ऐसे बहुत सारे experiment है where we try to see what is the charge to mass ratio, like Millikan's experiment also. Charge to mass ratio of an electron by Thomson's method, the values of deflecting electric field and accelerating potential are this and this. So electric field E is equal to 6 into 10 to the power 6 Newton per Coulomb. Everybody read it. And potential V is equal to 150 volt. Okay. So the magnitude of magnetic field that leads to zero deflection of the electron beam. So basically there is an electron beam coming like this, and there is, suppose, a potential like this, and because of this potential, suppose this is positive potential, this is negative potential, so there will be an electric field like this. This is electron beam. Now electron beam, electric field positive to negative. Negative. positive to negative, towards Yes. the decreasing potential. Okay. Yes. So this is the electric field. Okay. And electron beam will obviously feel a force downward because of this, upward, because of this electric field. Electron beam will try to go like this. It will be deflected in upward direction, correct? So it will feel a force in upward direction. अगर ये positive charge होता तो force नीचे feel करता. It is negative because it is electron, so it will feel a force downward. Now, if you want it to be undeflected, there has to be a magnetic field which will apply a force just opposite, correct? So suppose I apply a magnetic field. This is velocity. So V cross B is in upward direction, but because it is electron, it will be in downward direction. If I put a magnetic field downward, if I put a magnetic field upward, see what will happen. If the magnetic field is upward, so your Lorentz force is Q V cross B. तो suppose velocity से मैं ऊपर की तरफ perpendicular magnetic field लगाऊं, तो it will be V cross B. For positive charge, it will be downward, and because charge is negative, so it will be upward. So actually, this type of setup they will make. देखो ये बात समझ आती है? ये this is important in many other sense also.
understanding of directions. So if you don't get it, you can make it as XY plane also, and this is Z, and understand all type of forces. ये सबको समझ आ रहा है? बोलिए भाई. So essentially what I am going to do is, if you want it to be undeflected, it is Q is equal to F is equal to Q V cross B. Q, Q is equals to QVB. V cross B. Okay? F is equals to 0. So F is equal to Q E plus V cross B. This is the Lorentz force. If you want it to be undeflected, F is 0. then you put F is equal to 0. And then your field E will become minus V cross B. If this is perpendicular, so यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस वाई कैप डायरेक्शन में, तो हमारी वेलोसिटी है एक्स कैप डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है जेड कैप डायरेक्शन में. देखो ये सेटिस्फाई करता है, तो माइनस माइनस कट गया. माइनस 5 कैप आ रहा है सर. आप इनटू द प्लेन ऑफ पेपर क्रॉस आएगा यहाँ पे, मे बी मैग्नेटिक. जस्ट वेट. अगर मैं वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड velocity is in this direction, so for positive charges it will be downward. अच्छा, तो ठीक तो है. This electron will feel deflection in this direction, correct? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए? I want magnetic field, magnetic force in downward direction. तो if I want magnetic force in downward direction, so this is a negative charge and force is in upward direction because of this dot. So I want magnetic field in downward direction. Okay. So magnetic field I will take in minus z cap direction. Into the. Okay. Minus z cap direction. So this will balance out. Okay. So you can check it from this cross product. और minus this, ये चीज लास्ट में उल्टा करना पड़ता है, तो आप चाहो तो इसको पॉजिटिव भी ले लो एंड देन एवरीथिंग इज रिवर्स्ड. सो माइक अपना ऑफ कर लो. किसी का माइक ऑन है, जब बोलना है तभी अनम्यूट करो, बिकॉज फिर थ्रू आउट रिकॉर्डिंग वो पूरा ऐसे ही आवाज आएगी. सो दिस इज y cap is equal to x cap cross minus z cap. So now this is equal to y cap is equal to y cap. Okay? ठीक है, बोलिए भाई. अतुल समझ रहे हो? यस सर. सर इसमें परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 क्यों नहीं लिया डायरेक्टली? थीटा तो 90 ही लिया है ना. ये x और इसके बीच का एंगल 90 ही तो लिया है. ये दोनों 90 ही तो है. ऊपर आपने वेक्टर्स में रख दिया ना ए. बिकॉज 90 से वेक्टर नहीं किल होता. वेक्टर तो डायरेक्शन के लिए है, वो तो सिर्फ साइन 91 हो जाता है ना परपेंडिकुलर लेने से. क्रॉस लेने से यू गेट द डायरेक्शंस. ओके. अगर आप यहाँ पे 90 भी ले लो तो वी बी साइन थीटा, बट देन इज देयर इज अ यूनिट वेक्टर एन कैप.
So for the understanding of direction, cross product is important. Okay, चलो ये तो एक अलग चीज थी. सारी स्टोरी जो है, whenever there is a motion of charge particle, you can discuss this. Now you want the magnetic field. So magnetic field will be, ये तो डायरेक्शन वाली बात हो गई. यहाँ पे डायरेक्शन जैसी कोई चीज पूछी नहीं गई है इस क्वेश्चन में. So this is not for this question. This is the basic understanding of the dynamics of the charge particle. Okay. So B will be just E by V. Correct? Electric field by velocity. For the balance, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? So what we want Sir, to calculate P. velocity. तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है. Let us get the Yes. velocity. Okay. Half mv square is equals to E into V. हाँ, Potential. so that is kinetic energy of half me v square is kinetic energy, that is qv. qv means ev. That much is the energy. So velocity कितनी आ जाएगी? v is equal to 2 ev by me under root. This is the velocity. So what will be the magnetic field? E by under root 2 ev by me. So this is the magnetic field. You can put all the values and get the value of the magnetic field in Tesla. Okay. So question is clear. So this will Yes. roughly come out to be 0.8 Tesla. Okay. Calculate kar lena. This will come out to be 0.8 Tesla. One Tesla is very large field. So if कोई mistake है तो बहुत ज़्यादा Tesla आ जाता है, तो you can understand that it cannot be a correct answer. ठीक है, clear? So this was a question CSIR net 2021. Okay. So सारी values put करके and then you have to calculate also. Okay. Read this question, everybody. Everybody got it? So a positively charged particle is placed at the origin with a zero initial velocity in the presence of constant electric and magnetic field. So this is actually a very famous case when you have this origin and suppose you put transverse electric and magnetic field along the positive Z and X directions. So suppose this is X, this is Y, and this is Z.
सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? Z और मैग्नेटिक फील्ड की B। ठीक है। सो ये बहुत ही फेमस डिस्कशन है। किसी को याद है व्हेन ओरिजिन पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाता है विद जीरो वेलोसिटी, जस्ट रख दिया जाता है। ये सर इनिशियली इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, नो नो एक्सेलरेट नो होगा, फिर नो, इलेक्ट्रिक उल्टा लगेगी। उल्टा। इनिशियली मैग्नेटिक नहीं सॉरी, लगेगा। मैग्नेटिक नहीं लगेगी, हाँ रेस्ट पे है तो वो, दिस इज और इलेक्ट्रिक साइक्लॉयड लगेगा। मोशन। कैसा मोशन है ये? साइकिल साइक्लॉयड। वेव्स। तो जब आप इसका पूरा डिस्कशन करते हो, ये सारा आप इक्वेशंस के थ्रू कैलकुलेट करते हो, तो यू गेट टू नो कि दिस मोशन इज अ साइक्लॉयड मोशन। सो और इनिशियली वो जेड एक्सिस में मूव करेगा। overall it will go like this. It will go like this. Okay. And what will be the direction? इनिशियली जेड एक्सिस में मूव So करेगा, देन options are, wait, options are positive y direction is one of the options. So overall motion is in positive y direction. Okay. So जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो एक वेलोसिटी v डेवलप होगी, और जैसे ही वेलोसिटी v डेवलप होगी, देयर विल बी अ फोर्स विच इज q v क्रॉस b। सो v क्रॉस b फोर्स इधर लगेगा। ओके। सो आप ये पूरा, इफ यू वांट टू रीड द कंप्लीट डिस्कशन, सो यू कैन रीड इट फ्रॉम ग्रिफिथ्स। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाई जाती है, एंड द path is path is seen, that complete discussion can be seen in Griffiths, और वो पूरा डेरिवेशन भी आप देख सकते हो एक बार, इफ यू वांट टू सी। ओके। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So please see from the options. I will put in the group that topic if you want, huh? Chalo, see this question. So this everybody got it now? सबसे पहले जब ये चार्ज रखा होगा तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम इनटू पिक्चर, इट विल गेट अ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, और जैसे ही वेलोसिटी इधर क्रिएट होगी, v क्रॉस b फोर्स विल कम, इट विल टेक इट इन दिस डायरेक्शन। ओके। सो इस तरीके से ये इट विल बी मूविंग। Let's see this question. A proton moves with a speed 300 meter per second in a circular orbit in the xy plane. So this is xy plane, and suppose this is a circular orbit. Okay.
in a magnetic field 1 Tesla along the positive Z direction. So magnetic field किधर है? बताओ भाई. Anybody? Into the paper. This is, please read the question. XY plane है. In a magnetic field 1 Tesla along the positive Z direction. So X, Y, Z will be just out of the plane of the paper. बताओ direction clear है? Read it from the question. Yes, sir. Clear है ना? So magnetic field is in the Z cap direction. Magnetic field is given in the Z cap direction. It is of 1 Tesla. So I can write 1 Tesla in Z cap direction. Okay. Electric field is 1 volt per meter is applied along the positive Y direction. So electric field is how much? कितनी है? 1 volt per 1 meter. volt per meter means 1 Positive Y cap. in Y cap direction. So this is the electric field. Now the center of the circular orbit. The question is about the center of the circular orbit. So will that be stationary or will that be moving? That is the question. सर मूविंग होगा अभी लास्ट क्वेश्चन में जैसे था. So जैसे it is moving in a circular orbit like this. So magnetic field is keeping it in the circular orbit, right? You know, if only magnetic force is there, तो क्या होता है? Q V cross B. So suppose velocity and magnetic field, they are perpendicular. So it will be just QVB. That will provide the centripetal force mv square by r, and it will be moving with radius r is equal to mv by qb. This is the situation when velocity and magnetic field, they are perpendicular, and the centripetal force is provided by Lorentz force. But in this case, there is electric field in y cap direction. So what will be the net force on the charge? Lorentzian force. So that will be F is equal to QE plus QV cross B, V cross B. और डायरेक्शन देखो जरा. What will be the, अगर मान लो मैं ये वेलोसिटी वेक्टर लेता हूं, this, तो what is the magnetic force? X cap direction. Sorry, no. Suppose it is moving like this, centripetal force है ना? So Tangent. I am taking this direction. Suppose velocity vector, velocity is like this. So V cross B, B is in perpendicular direction.
So V cross B is towards the center. It is providing the centripetal force. B is in Z cap direction. Correct? और चार्ज जो है इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा इन द वाई कैप डायरेक्शन. यस और नो? सो क्या ये इसका सेंटर स्टेशनरी रह पाएगा? विल दिस सेंटर बी स्टेशनरी? बताओ. हम्म. चलिए लास्ट क्वेश्चन में तो नहीं था स्टेशनरी, अब सो इसमें अगर देखो यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स because of the circular motion is towards the center V cross B, because it is given कि ये circular motion कर रहा है. अब अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दूं तो ये चार्ज जो है ये तो it will start taking a Y component also, right? The center will not be stationary. Center will not be stationary. और अगर मैं मान लूं yes, अगर मैं मान लूं कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो सेंटर मूव करेगा तो आई कैन गेट दैट वेलोसिटी आल्सो, बिकॉज यू नो इफ आई पुट फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, v इज इक्वल टू e बाई b हो जाता है ना. तो दिस दैट वेलोसिटी आल्सो आई कैन कैलकुलेट एज 1 मीटर पर सेकंड. ठीक है? यस. यस सर, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, So direction will be in the direction of field, obviously. डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ सर. डायरेक्शन ऑफ, अरे भाई चार्ज जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा उसी डायरेक्शन में सेंटर भी डिफ्लेक्ट होता जाएगा ना. मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल गोल घुमा रही है बट एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ अगर लग रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट विल कीप ऑन मूविंग. ओके. Which option sir finally? तो फाइनली X, फाइनली देख positive लो. X direction. जस्ट अ सेकंड. ओके. सो व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, एक्चुअली ये तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन कायदे से सॉल्व करनी चाहिए, बट यू कैन just see the direction if you want to see the direction. So you can see the direction should be in the direction E cross B. E cross B is the direction when both are present. This is the direction of deflection. Positive X direction. So what is E? Phi cap.
y cap, cross z cap. z cap. So that is x cap direction. Okay. And linear distance covered is, Distance covered, then you have to write the differential equation. सर डायरेक्टली पिच निकाल के नहीं निकाल सकते अगर लीनियर डिस्टेंस कवर्ड पूछा हो. डिस्टेंस के लिए तो फिर टाइम भी चाहिए ना. टाइम आपने जैसे रेडियस निकाला वहीं से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 नहीं, पाई आर टाइम अपॉन. टाइम पीरियड तो ये चीज है जो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, बट इट्स सेंटर इज मूविंग इन E cross B direction. You want pitch? You are saying pitch? Sir, I'm asking about if linear distance asked, then would we Li- calculate pitch or No. something Linear else? distance कहाँ लिखा हुआ है? In the question it is नहीं written. पूछा नहीं. No. If they will So ask. linear distance means distance is equal to speed into time. So you need time. कितने टाइम बाद तुम निकालना चाहते हो? You need that time. But generally they ask pitch. Pitch means कि एक चक्कर लगाने के बाद जो, because you know this time ना? This time is time period. Time period of one revolution. So this you already know. You can calculate in the circular motion. ठीक है भाई. अगर तुमसे कोई पूछे कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए तो टाइम चाहिए, अदरवाइज तो वो लगातार डिस्टेंस ट्रेवल ही करता जा रहा है. तो दैट आंसर कांट बी गिवन. ओके, Okay. बट पिच कैन बी आंसर्ड. चलो ये क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग. So before this, let me just explain you what type of motion is this. So suppose you know, if the velocity is perpendicular to the magnetic field, your velocity is perpendicular to the magnetic field. If both are perpendicular, then what will happen? कि suppose कोई charge particle enter करता है and magnetic field is suppose like this. It enters like this, so it is just perpendicular to the magnetic field. So it will start making the revolutions like this. So what will be the direction? It will be direction of centripetal force that it will decide कि ये clockwise होगा या anti-clockwise होगा. Suppose this is the velocity, so you will take V cross B if it is a positive charge Q. V cross B means center is towards this, so that means it will make this type of revolution. और अगर मान लो magnetic field is like this and it enters like this, QV comma V. So V cross B, so this time center is towards this, so it will make this type of revolution. Okay, so this is very important. इसके ऊपर इस बार JEST में भी एक क्वेश्चन था, जस्ट आपको डायरेक्शन बताना था. So ये अगर सपोज कोई पॉजिटिव बीम इंटर करता है तो इट विल रिवॉल्व लाइक दिस, एंड अगर कोई नेगेटिव अगर कोई पॉजिटिव बीम इंटर करता है बट मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स, इट विल बी लाइक दिस. ये देखो डायरेक्शन क्लियर है सबको? संचिता बताओ. सर एक बार रिपीट करना. मान लो ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा क्रॉस,
that means it is perpendicular. तो V cross B करो, magnetic field is inside. Yes. तो अंगूठे के डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब ये ऐसे एंटर करेगा तो ऐसे सर्कल बनाएगा, राइट? Okay. ये सेंटर इधर है, बट Okay. सपोज इट एंटर्स लाइक दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस. सो Okay. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो V क्रॉस B सेंटर किधर आ रहा है? नीचे की साइड, इस साइड. सो इसका मतलब ये ऐसे घूम जाएगा, सेंटर विल बी लाइक दिस. Okay. ओके, Yes. Yes, sir. सो दिस इज व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर. अब मान लो क्या हो रहा है कि वेलोसिटी का जो एंट्री है वो परपेंडिकुलर नहीं है. ध्यान से समझना इस बात को. तो सपोज जो वेलोसिटी है उसमें एक कंपोनेंट तो है V perpendicular, which is perpendicular to the magnetic field, and another component is V parallel, which is parallel to the magnetic field. So what will happen कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो गोल गोल घुमाता रहेगा, बट जो पैरेलल कंपोनेंट है इट विल टेक दिस फॉरवर्ड. एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर आर corresponding to the magnetic field. So suppose this is the magnetic field. So the component of velocity which is perpendicular to this will keep on revolving it according to the charge clockwise and anti-clockwise direction. And सर आंसर पाए. V parallel, देखो डिस्कशन के टाइम आंसर मत बोलो, just सॉरी. listen the discussion. So V parallel component will take it forward. ठीक है? तो अब अगर मैं पूरी चीज को देखूं तो आई कैन कैलकुलेट दिस रेडियस ऑल्सो. व्हाट विल बी दिस रेडियस? रेडियस विल बी mv परपेंडिकुलर अपॉन mv by qb, ना? r is equal to mv by qb. This will be the radius of this motion, and also I can calculate the time period. Time period क्या होता है? Distance upon speed. So 2 pi r by speed, which is v perpendicular. This will be the time period of one revolution, and in one revolution, because of this parallel velocity, it will move ahead. So this is called pitch. Pitch will be equal to, this is distance, it is speed into time. So v parallel into time period. So this will become, ये मैं आपको एक तरीके से टॉपिक भी रिवाइज करा दे रहा हूँ. So this will become v parallel into 2 pi r by v perpendicular. So this is the complete story of this motion, which is called helical motion. Helix. It will be like this. आगे भी बढ़ता जाएगा और गोल गोल भी रोटेट करता जाएगा. Helical motion. Correct? So now the question is that the ratio of L. L is pitch. देखो जरा फिगर में. Hello. What is L? L is our pitch upon 2r. 2r is the diameter. Yes or no? 2r is the diameter. This ratio they have asked. So let us write pitch. Pitch is V parallel into 2 pi r by V perpendicular into 2 into, what is r? सर P by R पूछा है बस. P by 2r I think पूछा है. Sorry, P by r. P by r. So P is V parallel P को मैंने क्या लिख लिया? V parallel into 2 pi r by V perpendicular. Correct?
and R? सर कंडीशन भी गिवन है। तो वो लगा देंगे, एक बार पहले ये फॉर्मूला लिख दें। The initial velocity is such that component along the magnetic field is twice, तो वो लगा देंगे, don't worry. So P by R, what is P? V parallel into 2 pi r 2 pi R upon v perpendicular upon V perpendicular, into r or into what is R? v। M V perpendicular by सर डायरेक्टली r लिख दो, r से r directly कट ही R, हो जाएगा। right. So R V perpendicular into R, because R is here, na? Okay. So R and R will cancel. And what is the condition given? V parallel. v perpendicular is twice of v parallel। The component along the magnetic field, V parallel. The component along the magnetic field is twice the component perpendicular to the magnetic field. So this is given, V parallel by V perpendicular is 2. So it will be 4 pi. Okay. सर ये कैसे पहचाना कि पैरेलल कंपोनेंट ही होगा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग? मैग्नेटिक फील्ड में तो साइन थीटा होना चाहिए ना। So the initial velocity is such that the component along the magnetic field, along the मतलब parallel, ये देखो मैंने बनाया हुआ है, this is magnetic field, this is the component along the, what is V parallel? Parallel means parallel to the magnetic field. What is V perpendicular? Perpendicular means perpendicular to the magnetic field. So this parallel means parallel to the magnetic field, and this perpendicular means perpendicular to the magnetic field. So it is given that the component along the magnetic field is 2 times component perpendicular to the magnetic field. Okay. Read the question again carefully. देखो सोनिया पढ़ो, आ रहा है समझ? लैंग्वेज पढ़ो। सर लैंग्वेज आ गया समझ, लेकिन अगर पैरेलल कंपोनेंट है तो वो भी साइन कंपोनेंट हो सकता है। नो, साइन कॉस तो गायब हो गया ना पैरेलल लगाते। ओके, आप समझ नहीं रहे हो, रिजोल्यूशन नहीं समझ रहे हो। देखो ये वेलोसिटी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन यू रिजॉल्व इट, दिस इज V पैरेलल, दिस इज V परपेंडिकुलर। तो ये v cos कंपोनेंट हो जाएगा ना। तो ये वाला जो V पैरेलल है, दैट विल बी V cos थीटा। तो cos से तो उसकी मैग्नेटिक जरूरत नहीं है ना, यू डोंट नीड दैट। जब जीरो तुम हो उसको जाएगा। व्हेन यू आर सेइंग इट V पैरेलल, देन यू डोंट नीड इट। ओके, V parallel is actually V cos theta, and V perpendicular is actually, if this is angle theta, if suppose the particle enters theta degree with the magnetic field, so V perpendicular is V sin theta. So that's why this component does not feel any force. लॉरेंज फोर्स इस पे नहीं लगता, इसलिए तो ये सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चलता जा रहा है। और ये जो V परपेंडिकुलर है, ये इसको गोल गोल घुमा रहा है बिकॉज ऑफ द लॉरेंज फोर्स। ओके, ओके सर। तो ये डीप डाउन आपको ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि विच कंपोनेंट इज रिवॉल्विंग इट, V परपेंडिकुलर, बिकॉज इफ यू टेक दिस V sin theta, so this theta is perpendicular to the magnetic field. Okay, so this component is revolving it, and this parallel component remains undeflected because this will not feel any Lorentz force. Theta will become 0. Okay, ठीक है? यस सर। So this is the situation. So this is a good question, na? So complete helical path can be understood by this question. अगर कोई doubt है तो पूछ सकते हो आप. This is a very beautiful diagram to understand everything. Magnetic field बना लो.
मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट v पैरेलल है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट दैट इज v परपेंडिकुलर. Tell Shri Lakshmi, is it clear? Yes, sir. तो पिच इज क्लियर. पिच, और देखो पिच बाय रेडियस पूछ लिया. ओके, सो इफ वी नो एवरीथिंग वी कैन जस्ट मैनिपुलेट एंड टेल द आंसर. ओके, so this was that part which I wanted to discuss, and now just your dates are decided. Just try to revise 3 years papers, और उसमें कोई भी डाउट है तो just post it on the group. I will reply quickly. Okay, और बस अब रिवीजन करो. इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट में तो बहुत ढेर सारा मैंने ऑलरेडी करा रखा है, और ये लास्ट वाला पार्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया. ओके, चलो, थैंक यू सो मच. Thank you, sir.